Assalamualaikum. Thank you very much, my friends, my colleagues, and my pharmacist community who eagerly want to upgrade their skills to match the skills what we require in Australia in this community pharmacy setting. And I hope my voice is clear to you or whoever watching it. And uh, thank you very much for our pharmacist groups who participated in recent, that training programs that we circulated, and the programs that we circulated, and many of you have completed those exams. Or I just want to give a quick recap because I'm just coming back from a 3-day masterclass statewide ChemMart conference, which is a big conference with 600 pharmacists gathered together, like gather in under one roof for 3 days for advanced learning. And the learning that we achieve, hopefully we will apply that learning in our practice in coming months, and we will plan that, and we'll achieve more. The full scope of pharmacist, and the thing that which is more important for you, whoever is joining us from either from Pakistan or either from India or from Zimbabwe or Middle East, or even you are in Australia, even on your student visa. There's something which very important things which I really want to address because there are certain things which I noticed during this conference, especially the pharmacy owners. What are the expectations are from pharmacists who actually coming to this country and want to work in this country. So that's something which I want to address. And I kept this session as a live session just on YouTube. There are a few reasons that I normally give a link for Zoom for 100 audience to come in. But today I just plan it intentionally that I can make it simple, and I can just talk a few things which make sense. And also sometimes we get a lot of interruptions, and so maybe if you keep with me, if you keep stay with me, I will share the link to our closed groups where you can jump in the later part of the session, and maybe you can discuss a few things if you want to, or maybe ask questions, a relevant question, but not related to visa because I'm not a migration agent, right? So you know that. Don't ask me that I got that 491 and I'm applying for this number and I have that many points. No, no question on visa because I'm not a visa expert. All right, I'm just talking about the scope of pharmacists in this country and what are the possibilities how a pharmacist from outside of Australia can gel into this workforce, which we call Australian pharmacy workforce or Australian community pharmacy workforce. And you know that in Australia there are 6,000, nearly 6,500 community pharmacists located all over Australia. And you know, and but you know that there are certain cities of Australia that you can see on the map. Okay, first you need to forget about those cities. Forget about Melbourne, forget about Sydney, forget about Brisbane, forget about Adelaide, forget Perth. Okay. Any other cities, even forget about Geelong. You have to see Australia hiding those 5 cities, like 5 or 6 cities, when you're targeting yourself to come here work in Australia. So that's very, very important. First point. Are you with me? Or is it very hurtful for you to know that? Okay, I'll just put this phone on silence. So okay, because I normally sit in my head office in my Adelaide, which I have a few screen, but I'm just doing this because I'm traveling from Adelaide to Port Pirie. I was working today in Port Pirie, so I only have one screen in front of me. So I don't know how my voice is going, how my voice is reaching to you. If you can say a few things in the chat, so I know that you are listening
100%. I'll just quickly check the chat box. Is it going good? What about visa rate? I don't want to talk about visa. I'm not a visa expert, so forget about visa. We need to hire a visa person. Your voice is clear. Oh, that's very good, Sami. Thank you very much. Good afternoon. Assalamu alaikum. Okay, that's been the voice. My voice is very clear. That's good. Thank you. Thank you for confirming. And hopefully my vision is also very clear. Um, um, okay, let's talk about where is the end product, where you as a product going to end up working in this country. That's very important for you to understand. And if someone has misunderstand, if someone going to do the whole process of caps, and then they will look for jobs in city, they will end in a depression. Okay, so this is the first thing you need to be clear about it. Many pharmacists sitting in cities, big cities, and those big cities doesn't really make sense for them because जहाँ पे jobs हैं वहाँ पे हम लोग देखते नहीं हैं. I'll say again. Okay, I'll say in the terms of stats. Okay, there are certain bodies who do work for surveys, especially Pharmacy Guild is one of the biggest lobbies in Australia, Pharmacy Guild of Australia, and they do work for surveys. Me, as a Pharmacy Guild long-term member, I do participate in the survey. I say things because we have to say. So, इसी तरह, there are certain other bodies which are related with pharmacy students who are coming out of the universities. And according to those surveys which were done or which were done recently with the NAPSA, if you Google NAPSA, NAPSA, NAPSA is not NASA. It's not that NASA rocket wali, is in NAPSA. NAPSA is an organization which is a pharmacy organization for students, or recognized body in Australia, which represent all Australian pharmacy students. Okay, according to their survey, वो कहते हैं कि हम जो है ना कहाँ काम करेंगे. उनका जो एक सर्वे का क्वेश्चन होता है, they're going to work in maybe in a small number will be working in some industry, some in research job, some in hospital pharmacy, and many of them in community pharmacy, but less now as compared to the latest survey. And when they asked that, would you go and work in regional Australia? The percentage of yes is 0.0000001%. मतलब कोई नहीं जाएगा. Nobody will go. Nobody will go. Okay. So who will go? Someone need to go. So someone that need to be you. So you can be that someone. So try to understand what I'm trying to explain to you. Are you getting my point? Oh my God. अगर मैं इस तरह ये बात कह दूं और आपको नहीं समझ में आए तो मेरा पास इससे ज्यादा दिमाग नहीं है समझाने का. Okay. Oh my God. I was in Gold Coast yesterday. Do you know that? I was in Gold Coast for 3 days, and Gold Coast is regional. I don't know, but it's not regional. I don't think so. No. You got it wrong. Arana Hills in Queensland is regional. I don't know how far you can see in your telescope. Okay, so don't get confused with the definition of migration that regional Adelaide is regional. No. It's not regional for you. Okay, you got it, my point? Very good. Someone is participating in the chat group. Wow. Okay, that's very nice. Thank you. Okay. So what I was telling you, where the jobs are, right? So I give you the clue. If you look for, okay, I need to give you a feedback because I was sitting with pharmacy owners, a lot of pharmacy owners, and मेरा मेरा जो फेस है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कैप्स के लिए मशहूर हो चुका है. ठीक है, मतलब कैप्स जहाँ भी मैं देखूं या मुझे कोई देखे, दे विल फील कि दिस इज द गाय हु टॉक अबाउट कैप्स ओवरसीज फार्मासिस्ट का ये चमचा आ गया. ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि यार इसके पास एक ही टॉपिक है बात करने का. ठीक है,
ठीक है, इसके बाद एक ही टॉपिक है और इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, so they know. So many of them has understand that के last year, मतलब 2023 की master class, I was in Adelaide, I think. Yes, in Adelaide, in master class. If you remember, we did seminar, we did webinars, we did conferences, including Mr. Zahid Hafiz Chaudhry Saab, Honorable Pakistani High Commissioner. We organized a very big conference, digital conference, which was highlighted on Pakistan media. Different channels in Pakistan has covered did a coverage because of Pakistan High Commission, high level stakeholdership was involved in that. Okay, and so we did a lot of propagation, a lot of message out of this Pakistani pharmacists can get to know. They break the fear, so they can break that fear of exam. So it was done. We achieved that target. We achieved that target. That up kal parson, I was sitting with some young pharmacists, and they was telling me because they passed the exam, and they were saying that sir, exam तो बहुत आसान था. मैंने कहा ओए, ये एग्जाम आसान नहीं था. ये एग्जाम जब तुम्हें पता नहीं था इस एग्जाम के बारे में, उससे पहले मैं पूछता, तुम कहते नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. हमने उसको आसान किया. वी ट्राई टू ब्रेक द आइस, ट्राई टू ब्रेक द फियर फैक्टर. ठीक है ना. तो वो एग्जाम हो गया. ठीक है. अब जब यहाँ लोगों ने जॉब्स हासिल की, व्हेन पीपल केम हियर, there was few jobs happening. There were a lot of jobs. Applicant came from different part of the world. Okay. So I met Mr. Thakur. He is a KAPS past pharmacist, very hardworking from probably last 15 years. He owned 3 pharmacies and he runs a pharmacy. He was running a pharmacy in Gold Coast, not Gold Coast, Keynes. He sold the business because there was extreme shortage of pharmacists. They could not manage pharmacists there. So he was telling me a real story day before yesterday in the dinner, saying that I feel very bad that I receive in my Sydney pharmacy, I receive more than 250 applications. So where is the information missing? Why overseas pharmacists are trying to get into cities? Why? They should know that these jobs in cities are no or not available because ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल देख के उनको अच्छा नहीं लग रहा. ऐसा नहीं है. उनको आपसे स्मार्ट बंदे वहां मिल रहे हैं काम के लिए. Because the student who study there in universities, they work they work in pharmacies as a staff, as a pharmacy student, as a pharmacy assistant, and they study their university degree. So in 4 years' time, they work, and they become a very useful staff, well-trained staff, and they become very productive staff for them. Okay, because they're working in major cities, because the university is there. So that's something which they can quickly like become a workforce. So that Mr. Thakur was saying that Irfan, someone need to realize that the people who are passing the KAPS exam, they need to do 2 things, which I always try to say, which I'm saying to many of you, that upgrade your skills. Passing KAPS is not at all a tool to work or to get a job. You can match the criteria of equivalency of in university level, but KAPS does not teach you anything related to the work that we do in pharmacy. KAPS does not teach you anything what is pharmaceutical benefit scheme. KAPS does not teach you how to communicate effectively with Australian community. KAPS does not, passing KAPS does not guarantee
that employer will be satisfied that you as the person know about Australian culture. Passing KAPS does not a surety to any employer that how you will behave in Australian society or Australian culture or mainly workforce. We're talking about workforce. We don't care what you do in Australia outside of pharmacies. Your life, what you do, that's up to you. Okay. I'm talking about in terms of this pharmacy workforce because I was trying to provide a solution for pharmacy workforce shortage. And that's why I fall in love with propagation of this KAPS thing. It become a huge program in Pakistan, and many of you have done the KAPS exam because of that environment that we created, breaking the ice, breaking first of all, spreading the news that there's a chance for pharmacists to come. First news. Second is you can pass the exam. Third is you can do the exam in Pakistan. So these are the things which we have achieved. Not an issue with that. No problem. And you have also achieved that. But you know that कैप्स करने के बाद बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है ठीक है okay another employer from Albury, Teddy White pharmacy owner from Albury, become my friend in 2023. Someone introduced me, or maybe I just bang because I always go and bang into new people. I take photos, I take exchange numbers. Somebody hate me, but somebody love me. I don't care. I don't mind. That's how I make connections. Okay, so I made connection with one of the pharmacy owner in Wadunga and Albury, which is the border of New South Wales and Victoria, right? And I just request, would you be interested in taking Pharmacist from overseas? And he said, yes, we can. Yes. So some sort of conversation happened there. Okay. Some sort of conversation happened and we break an ice. So they have taken the overseas pharmacist last year. This year, when I went to the conference, the same fellow met me. And I think I was in a dinner, I was just picking some food, and he just saw me and he said, Irfan. And I said, who's that? And I went to him and he said, Irfan, what's going on? I said, oh, very good, very good. I'm very happy. I'm very hungry. So I'm eating the food. How are you? How are this? And he started telling me his feedback suddenly. And that feedback become a big question mark. Big question mark. Because I thought I have done enough message out for our beloved KAPS Pass pharmacy colleagues that look, we need to upgrade our CVs. We need to learn more about pharmacy system. We need to watch videos of champion pharmacists. We need to watch all the intern pharmacists of the year award videos that are available on YouTube, that are available on Pharmaceutical Society website, that are available on Pharmacy Guild. They are available everywhere. So you just Google and find out who is the best pharmacist, watch them, how they speak, how they talk, what they know. And intern pharmacists, I always quote because they are the journey. They are the people who have achieved or complete the journey which you are about to start. So that's why I always say, look for intern pharmacists of the year from last year to previous year to previous year. Look at them, what they have done, how they talk, how they look, how they dress up. So I always talk about that. Okay. So just copy paste. This is a very key thing. If someone is successful, if you just copy and apply those things into your practice, you can become like them. Not a big deal. Many world leaders say this. Many vocal people say this, that you don't need to invent something. You just follow someone. Make someone a benchmark. Make someone like a coach. 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 Like someone can be a coach. So he can follow their guidance. Same thing. If you're working in elite sports like Olympic or World Cup, where Pakistan has been kicked out. So you can know that all the top players are like they're still playing the top level of sports, but they still have a coach. So in your journey, keep someone as a coach.
And coach is not the person who just come and go. Team coaches are not like short term. It depending on how much you can take from, what you can achieve, where you want to go far, how far you want to go. So that's something you need to do. Either follow someone or take someone advice or take someone hand and become their colleague. I mean, we call that thing proximity. People around you make you better. So if you have better people around you, obviously you will be better. If you have challenge around you, and if you're ready for challenge, you can make better yourself. Okay, so maybe I'm talking a little bit different. I want to see in the chat box that how you are digesting this. Is it going into your head or is it going over your head? I'm waiting for your response in the chat if you're still there watching me. I know there are 50 people watching at the moment. It's my dream that we pharmacists can make the own cricket team along with saving lives. Wow. You know, pharmacy cricket is a big association. If you Google pharmacy cricket of Australia, you can see there's a body already working. There's a body already working, okay, which um, uh, which is working in this country in Australia for more than 100 years. So you can watch that if you want to be a part of the cricket team. Okay. The feedback that I received from Albury Terry White owner was like really a feedback which I also come across. Okay, what he was telling me that, Irfan, what's going on? That guy was working with me, and all the time he was talking that I used to do that in my country. I used to do that in my country. This is how I do in my country. And every time I have to say that Albury guy was telling me that every time I have to say, I don't want to hear. What you do in your country is your problem. You are here to learn. That's it. So, beside saying that few times or many times, he was very angry. And he said few bad things like बहुत सारी गालियां बकी उसने मेरे सामने और by people live in past. They should live in the moment. They should be learning here. What is happening here in Australia, that should be adopted rather than thinking that I used to do that over there in my country, I used to do this in my country, rather saying that. So I am giving you a tip that never ever use a word that you used to do that in your country. I'm here to learn, that's it. And also he said one thing, that KAPS past pharmacists knows nothing about Australian work thing and they're arrogant. Oh my God, that's very harsh. A person who's teaching you with 20, 35 year experience and giving you a preceptor, giving you a environment of learning, and you are showing arrogancy to that people, that kind of person. I mean, who gonna employ now? That guy won't employ any KAPS pharmacists, I'm pretty sure. And if he just whisper this to many 600 pharmacy owners, that will become a wall against KAPS pharmacists because they will think everyone will be the same. And now people are asking me, can I get a sponsorship? Can I get a sponsorship? Think put yourself into pharmacy company owners or managers' shoes and just make a decision that how that's going to look like if you are in that position. Something which I thought I just share. That was live, very important points. It could be very small point for you because many people don't hear. Look, there are few phases when you come to Australia. There are very like different phases you go through.
first 2 3 months you're very excited and you think that you have done something which nobody has done in the world, and you conquer the world. And that's why sometimes people become arrogant. So that could be one phase that person was going through, and then they get depressed because they don't see anything what they actually dream about, and what they think is sometimes shatter their dreams. So that's something which we need to realize, we need to understand. Okay, so these are the feedback thing which I want to share. Okay, what was the learning? Okay, we were there for masterclass, which is a top level of very high end of training for pharmacists, and there were 600 pharmacists, and around 330 or 50 people from different pharma companies who attended that event. Okay, so that is a very gold standard program which is run by this group, by this company called Terry White, and they're running this from last 10 years. And this training is considered as one of the top elite training in this country for pharmacists. I always love to go there. There are two, three reasons why I go there. One is that I want to meet and new pharmacist. I want to make a friendship with new pharmacist, and I also want to learn about the trend, the changing trend of the industry, and the changing trend of the industry, or the future. I call it futuristic approach. So future, we can see how things are moving around, and what are the plans that is being done, and especially this time when last year, exactly last year, same time, when 60-day dispensing hit our pharmacy uh, uh, industry, there was a depression, there was some downside of industry where we pharmacy operators were thinking that how we going to sustain the business, and how we going to maintain our business, where we can keep our um, okay, and this is something which very depressing. But since that 8 CPA has been announced, 8 CPA, which is Eighth Community Pharmacy Agreement, which is just signed by Australian government and Pharmacy Guild of Australia, and this is the 5 year agreement which is signed. And in this agreement, um, there are a lot of privileges, lot of extra resources, or extra, I would say that remuneration has been allocated by pharmacy, uh, by the government to the pharmacist. It means that pharmacists will have more opportunities to work with certain new programs, especially that full scope program, which is going at the trial in Queensland at the moment. And the program is nearly on its completion, and other states have also started that program, which means that pharmacists will be acting as a prescribing pharmacist. So pharmacists will be acting as a, not as a doctor, but they will have a right to prescribe legally. Mean that when a doctor is not available, for example, or doctor is very busy in other health, other conditions, like more chronic condition, then pharmacists can act um on care of duty, where pharmacy is already a primary healthcare in this country, and they can prescribe on 18 different elements. All right, so there's a postgraduate diploma which is offered by universities in Northern Queensland, and some pharmacies have completed the training, some of the doing at the moment. And so we look forward for that new opportunities coming. And also aged care pharmacist is another venue which was started July 23, which was announced in July 23, and is still in very early stages, where pharmacists can be employed by aged care. So aged care will have a mandatory pharmacist requirement. Other than that, travel vaccine, and all sort of vaccination, especially the COVID vaccine, flu vaccine. So these areas also very much
in high acceptability, and the demand has been increased. And so we have talk about cannabis prescription as well, which is another wide area for pharmacists to get into training. And cultural training. There's a PSA, Pharmaceutical Society of Australia, announced that there's a training available by the name, which is a cultural training for Australian cultural training, especially within First Nation. First Nation, if you know what First Nation is, the original local people, which we call indigenous people or Aboriginal people. But the beautiful word is being signed, or now a word is or term is called First Nation people. So First Nation people, for learning their culture, there is a special training now available, which is government is actually behind of that training. So they want every pharmacist to do that training. And if government was not in the favor of that, then it will be a very costly training, but it's now funded by the government. So you can do that training. If you are an APRA register, if you have an APRA provisional registration, if you have passed the KAPS exam, if you have done the English exam, you can attend that training program. The training name is called Deadly Training. Deadly training means not you're going to kill someone. Deadly word is used in the Aboriginal language that you are good. Deadly means you are good. So that's why they named this training as Deadly Training or Deadly Pharmacist. And there was a shirt, there was a tie that was published or announced by the PSA. So I bought that special shirt, which says about the all the artwork of First Nation and the word that I'm a deadly trained pharmacist. Okay, there were the ties as well. And yes, and interns can do it. That's the big news. As a opera provisional registered, you can do it as well. So if you are sitting smart there, you can go on PSA website right now, enroll in the program and get that training, 7-hour training. I think you can do that. I'm not going to share the link. You need to find the link. Okay, I'm not your servant that I'm going to share the link. You need to find the link because you are smart, you have 5-year degree, you know how to use the Google, you can share. And if you following me on my LinkedIn, I've already shared that. You don't have to ask this question, Umar. You can just go there and find out. And you can see me wearing the shirt, Deadly Training shirt, Deadly Pharmacist Train shirt. But I haven't completed my training, but I'm wearing the shirt because I was with the PSA people, and I was saying to them, I will send out the message to many, 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 many pharmacists. So I have done it. So whoever is smart, whoever is listening to me, they will complete that training in next one day if you are smart, isn't it? How many smart people are listening to me today? How many smart pharmacists listening to me? Okay. One more information that I want to pass, that recently our colleague Vikas Ashraf, he visited Pakistan, and he again did a very good webinar. Not a, it was a face-to-face seminar, like a conference, 300 people sitting in the University of Bawalpur, and that that program was like endorsed, or online link was used, where High Commissioner Sahab Zahid Sahab also attended from Canberra, and also the previous High Commissioner Babar Amin Sahab was also involved with that program. So in that program, Vikas was telling all the Pakistani pharmacists that, look, we all know what is KAPS. We all know about KAPS. We all know how to do the examination, how to prepare the examination. And even after that charcha, even after that, so many, that information goes out, that how you can pass the exam, even if someone is missing that opportunity. I would say that you need to get involved, get into the pharmacist community who are working with us. Maybe just get involved. There's a Facebook page we have made, which is called, do you know what's the Facebook group that we have? Where I think 2,500 pharmacists involved from Pakistan region. There is, um, what is it called?
Pakistani pharmacists in Australia. Yes. You know why I started this group? Why? I'll tell you the story quickly. Why we started this group? Because in February 23, one of the young Pakistani pharmacist, intern pharmacist, young mother, died in a car accident. And no one can believe that she died. She was at her work and she was driving back home, and we were all worried that where she is. If you know, I'm talking about Kuratulan. अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, बड़ी जगह दे, अच्छी जगह दे, और उसकी बच्ची को सब्र दे, और उसके हस्बैंड को अच्छी एक लाइफ गुजारने का मौका दे. तो आई मीन तो उसको बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज attached. He was my student. Um, very effective communicator, very effective. You can even see our videos on our some of the social media on LinkedIn, and she was also on the television as well. Her videos were also shown on Channel 9 television as well when she passed away. Thanks for Australian media for showing Pakistani pharmacists on that big scale, but unfortunately, we lost that life. We lost her, her so that female pharmacist. I'm quite vocal for women empowerment, but we lost her. But Barhal, we were looking for Kuratulan in different forums or different places, and I found some similar name pharmacist in that one of the groups, and I just communicate with one person whose name was Kuratulan from Darwin, and I just came to know from her that she doesn't know any pharmacist from Pakistan in Australia, and that strikes me very hard. And I thought I should take this step right now. I should gather all the pharmacists who are from this country, maybe bring them close, bring them in one location so they know each other. We can make some small community, and we can gather and we can learn from each other. Okay, so we can assist each other. We can make a leadership group. We may be helping others, because I teach about entrepreneurship, and that's another passion that I do. So there are a few pharmacists who are running their own enterprises, and that's something which I'm really proud that I'm involved with the early days of their training. And so that was the startup of the program. So I would request you to join that Facebook group, and become part of the community and spread the good news, because many pharmacists that approaching me these days, they don't even know that they're still thinking about that fear factor. They're still thinking about that passing KAPS is difficult, passing paper one or paper two is. They're still in that aura. They're still in that lost. That back in time when in 2021, when everyone in Pakistan were not aware. So they were in that phase. So I want this message to you to at least 10, at least tell at least 10 pharmacists that, look, this is something available. Join this party. Okay, join this group, join this party. It's not a political way we need to vote for me. It's nothing like that. It's about building your career and stay together for better, because I have planned something like Australian Pharmacy Foundation. You can join that as well, which will give you a name that you belong to a group. And also yes, so it's a lot of things that can be achieved if you like in that conference which I attend yesterday, like 3 days in Gold Coast, and I give you another example. I was there, and I met one person standing behind a coffee table, and the person was having a coffee. And I normally have a habit to say hello, hello, hello to everyone. I don't know. I went to that person. I say, "Hello, how are you?" And as soon as he replied, I feel that, oh, this person looks like Indian, or not Pakistani but Indian. So I just asked, "Were you working?" and this and that, and suddenly I came to know he's from Pakistan. And I said, wow, okay. What's your name? Where you working? And this and that. And he said that
I'm working in Canberra. And I said about Wakas Ashraf. He said he's my boss. And so, yes, small world. Okay. So I just exchanged the number. I said, give me your number. And I said, come and do a photo. And after that, I shared the photo and I walked to a other booth. So I walked there and I was thinking to have a coffee. I was waiting in the coffee queue and I saw two young pharmacists. Looks like they looked like one looked like both looked like to me some European or Greek or Indian background. So I just said hello to them again. And you know what? Uh, one person was studied in Sydney, and one person was from Lahore University. So another Pakistani bang into me into that conference out of 600 pharmacists, and uh, and I just say hello, 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 and I said, do you know there's another Pakistani here? He's from your same university, and this and that. So I pointed him, and I found him. I introduced him. They did a hug. जैसे देवर बिछड़े हुए भाई भाई मिल गए ऐसे कोई ऐसे वो मिले एक दूसरे से जैसे और मैंने कहा तुम्हारे सेम यूनिवर्सिटी के हैं वो लोग तो उन्होंने गप्पे शप्पे लगाई फ़ोन नंबर लिए ये वो और फिर मैंने उनको बोला कि भाई लोगों से मिलो लोगों से ताल्लुक बनाओ चीफ फार्मासिस्ट घूम रहा है इसको जाके हेलो करके आओ इसको बोलो कि मैं हूँ तुम हो मेरा नाम ये है मेरा नंबर ये है और वो जनरल मैनेजर घूम रहा है उसको जाके मिलो जाके खाना पीना बंद करो हम खाने नहीं आए यहाँ पे हम यहाँ पे लोगों से नेटवर्किंग करने आए तो दिस इज व्हाट आई वाज टीचिंग देम आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट समटाइम वी आर वेरी शाय आई वाज लाइक दैट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे आपको लर्निंग होती है आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं ठीक है तो कहने का मकसद ये था कि यू नीड टू गो आउट एंड एक और पॉइंट था जो कि ठाकुर साहब ने मुझे बताया जो कि मैं बताता हूँ लेकिन आई थिंक आई नीड टू टेल यू बिकॉज कुछ और फार्मासिस्ट जो कि कैप्स पास करके मुझसे मिलने आए थे देवर टू यंग फार्मासिस्ट केम फ्रॉम ब्रिस्बेन एंड वन फ्रॉम गोल्ड कोस्ट they were from our elite in one other boot camp group so they both have passed the exam. The reason that I'm telling you this is small story that they were in the proximity, they were in the network. Okay, so these two recent example, they were in the network, and they have achieved the exam. And on the table when he was sitting with me, he was saying, ये तो एग्जाम बहुत आसान है मैंने कहा भाई ये एग्जाम आसान नहीं है ये एग्जाम आपने अब पास कर लिया है तो जाके उन लोगों को ढूंढो ढूंढो निकालो 10 से 20 लोगों को निकालो और उनको बताओ जाके ये एग्जाम कैसे पास होता है और ये पास करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं कोई ज़रूरी नहीं है अब मुझसे कोई 100 दफ़ा लोग पूछते हैं यार मुझे एलीट ग्रुप में ऐड कर लो भाई एलीट ग्रुप होता क्या है एलीट ग्रुप ये होता है कि आपने आउटकम जो है ना यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एक्सेल किया हुआ आपने आपको अपनी वीडियो बना के अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आता हो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर के सामने सबसे पहली शर्त जो कि बहुत ही तकलीफ-देह होती है लोगों के लिए। लोग ने फार्मासिस्ट लोग जो है ना वो मुझसे नाराज़ होते हैं, पता नहीं क्या-क्या लोग मुझे कहते होंगे। आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट दैट कि मेरे बारे में कोई क्या कहता होगा, कि उसको वीडियो क्यों चाहिए तो अबे मुझे भी तुम्हारी वीडियो देखनी भी नहीं होती। मैं तुमको एक्सरसाइज़ करवा रहा होता हूँ, तुम्हें फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा होता हूँ। दिस इज़ द फिलॉसफी। तो एलीट ग्रुप में हमें आना है। तो एलीट ग्रुप की पहली शर्त ये होती है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। आई डोंट वांट टू हियर अबाउट योर पीटीई स्कोर। आई डोंट नीड दैट। और एम्प्लॉयर को भी नहीं चाहिए आप मैं भी एम्प्लॉयर हूँ आई गॉट कितने 7 8 हाँ 8 लोकेशन है मेरी ठीक है मुझे मैं पीटी नहीं देखता मैं उसके साथ 2 मिनट भी किया मैं 30 सेकंड में जज कर सकता हूँ कि सामने वाले की कम्युनिकेशन स्किल क्या है ठीक है तो इस वजह से वो जो वीडियो होती है ना आपकी वो बता देती है सामने वाले को कि वेयर यू स्टैंड ठीक है तो उसको अच्छा कर लो उसको अच्छा कैसे करोगे उसको अच्छा ऐसे करोगे कि जब आप मेरी वो जो वेबिनार है ना जहाँ मैंने बात की होगी कि इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर को देखो जाके भाई फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड विनर को जाके देखो जब उसको देखोगे तो सोचोगे यार मुझे उसकी तरह बोलना है मुझे उसकी तरह बोलना है मुझे उसकी तरह का बात करना है मुझे उसकी तरह आंखों में आंखें डाल के समझाना है मुझे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आपको एक्सप्रेस करना है तो वो चीज़ अगर आपने लर्न की है मुझे ये नहीं सुनना है या एम्प्लॉयर को ये नहीं सुनना है कि आई गॉट 8 year एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी फार्मेसी आई डू द इन्वेंट्री आई डू द thorough check of a script I check the patient I check the doctor they are not interested in that bullshit
They are interested in you, how you can communicate effectively, how you can gel in Australian workforce environment. आप कैसे काम करते हो लोगों के साथ आपका रवैया कैसा है, ठीक है। अभी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी वीडियोस आती हैं, आई डोंट हैव अ टाइम टू स्क्रूटनाइज दोज वीडियोस, आई डोंट हैव अ टाइम, आई एम वेरी 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 बिजी पर्सन, ठीक है। अब ये आपका काम है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, that's your responsibility to make your communication to that world class level which is required in Australia, ठीक है ना? Do you understand that? That's so simple. Or I'm not a big communicator. I've been on television. I've been on Australian television. I've been on channel ABC News. I was in one of the documentaries. I've been on Pakistani channel as well. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा communicator हूँ. I'm not saying that. But I'm telling you that just go and follow those who are ranked top in this country, in their industry, which you are seeking. All right? What you are chasing, just go and see the world class best people. Don't follow USA, don't follow UK, only follow the top Australian pharmacist. Understand? That is very important. The first thing, elite group, elite group, elite group नहीं करो, अपनी communication अच्छी कर लो. Elite group तो कुछ भी नहीं है भाई. Elite group is a community, basically a trustable community, a community which we can trust each other regardless of anything to catch from each other, regardless. जो एलीट ग्रुप के 100-200 लोग हैं, उनकी आपस में ऐसी कनेक्टिविटी है कि शायद उनकी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी ऐसे नहीं होंगे, उनके स्कूल के दोस्त भी ऐसे नहीं होंगे. आई ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी लास्ट ईयर, and those who are watching, they can say something in the chat that what is elite group meant to for them at the moment. Please, if you are with me, maybe just say a few things, something that you have experience in that. And उसके बाद मैंने elite group बंद ही कर दिया because I don't have a time to scrutinize or check those videos to bring, because I selected those people at that time. I selected nearly 200 pharmacists to come and work with me and go through that experience of becoming a better human being. First of all, because we are pharmacists, उससे पहले हम human being हैं, ठीक है। हमें केयर कैसे देनी है, सामने पेशेंट को केयर कैसे देनी है, ठीक है। आपने कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है, हाउ, व्हाट आर द एप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट यू नीड टू यूज, ओके। डिजीज जो है वो, उसको उसका सोल्यूशन, हम कहते हैं ना कि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम सोल्यूशन तो देते ही हैं, हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ पे हम एडवाइस करते हैं। बेस्ट थिंग ये है कि आप कैसे फील करते हैं उस सामने वाले की उस प्रॉब्लम को. एग्जाम्पल, लेट्स डू एन एग्जाम्पल. एडीएचडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एडीएचडी का. एडीएचडी एक ऐसी डिजीज का नाम है, शायद उसको हम सुनते समझते हैं कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा, या रिजेक्टेड, या अटेंशन डेफिसिट फैमिली का एक मेंबर, या इस तरह का, मतलब उसको हम माशरे में बहुत बुरा समझते हैं, ठीक है। व्हाट इफ यू स्टार्ट फीलिंग of that feeling, you're a pharmacist, and if you start feeling in a way how that family feel, or how that child or how that person feel, and what is the expectation of that person from you as a service provider, if you start doing that kind of level of thought process and is matching that service, matching that communication level, this is what actually I want to advise those who are coming to this country. And this is highly recommend, highly acceptable, I would say, highly acceptable. And the one that
I always see one quotation whenever I'm going from Adelaide Airport. There's very nice two things I always notice. One is my cricket passion. There's a place on Adelaide Oval. Sorry, not Adelaide Oval, but in Adelaide Airport, there's a place where they have a big uh, photo of Adelaide Oval with three signed Australian team cricket bats and one Australian team shirt. I always go there and take a photo. Always, regardless of I have done many hundred photos there. I always go there. I don't know why. I'm just crazy. And another thing is that it says that um, when things are very tough, when things are very tough, like in CAPS situation, past CAPS people, things are very difficult for you. And always think about an aeroplane. That aeroplane actually fly against the wind and it take off against the wind. So this is a quote which I always see, and I was always get a lot of energy by looking at that quote that is written in Adelaide, Adelaide Airport. When we land, we come out, we read that. So that's something which I thought share with you because I always see that um, uh, pharmacist past, there's no hope, there's no E or I coming और उसके ऊपर टॉप नंबर्स बताते हैं अभी किसी ने कहा कि 6,000 फार्मासिस्ट बाहर बैठे हुए हैं किसी ने कहा 3,000 बैठे हुए हैं पता नहीं कितने हजार बैठे हुए हैं आई डोंट नो कितने हजार बैठे हुए हैं एक्चुअल डाटा तो सबके पास है एपीसी के पास उनको पता है कितने बाहर बैठे हुए हैं और हम एक गैस भी कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इम्तहान दिया लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी 1,000 लोगों ने इम्तहान नहीं दिया लास्ट ईयर मुश्किल से 600 लोगों ने इम्तहान दिया है लास्ट ईयर ठीक है ना और 8 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं ठीक है और उसमें से 200 हमारे एलीट ग्रुप में थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में नहीं थे हमारे साथ बहुत सारे इंडिया से थे हमारे साथ बहुत सारे जिम्बाब्वे से थे हमारे साथ बहुत सारे मिडल ईस्ट से थे तो मुश्किल से 100 लोग भी नहीं होंगे हमारे साथ के जिन्होंने इम्तहान दिया होगा और दो लोगों ने के साथ ऐसा हुआ होगा कि दे मे हैव फेल आई डोंट नो लेकिन काफ़ी लोग ने पास कर लिया लेकिन अच्छी बात है अच्छा अभी जुलाई आने वाला है इनकी नई पॉलिसीज आएंगी तो होप फॉर द बेस्ट 60 डे डिस्पेंसिंग का जो पंगा था वो नलीफाई होता हुआ नज़र आया है अभी यहाँ पे जो 8 CPA की अनाउंसमेंट हुई है उनकी जो स्लाइड्स हैं और ये उसकी वजह से काफ़ी होप बनती चली है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस बनेंगे लेकिन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो द रीजनल वर्कफोर्स shortage is the only reason why we need pharmacists in this country. बहुत सारे फार्मासिस्ट जो हैं वो दे कम दे वांट टू बिकम फार्मासिस्ट इन बिगर सिटीज़ कुछ तो हैं ऐसे जो अपने सबर्ब्स पे ही घूमते रहते हैं और उसके आगे देखते नहीं है बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट्स की वजह से अपने होने की वजह से स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वो उससे बाहर नहीं जा सकते बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग रीजंस हैं देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जॉबें ख़त्म हो गई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनल वर्कफोर्स में कहीं बाहर से आसमान से फरिश्ते आके जॉब करने शुरू कर दिया ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे अभी भी जॉबें खाली पड़ी हुई हैं वहाँ अभी भी लोगों को हायर करने की बातें होती हैं और जब हायर करते हैं तो वहाँ पे फिर ऐसी बातें होती हैं कि इरफान व्हाट्स गोइंग ऑन they talk about their own country they always think oh I used to do that and they say what the fuck like that the Aussies are very blunt they always say in front of you so that's what happened with me 2 times in the conference तो उसके बाद मेरा लहजा भी वैसे ही हो गया था I was in the same like in the same mood I was talking like Erfan come and go hey who like that I was doing that I was a bit funny at that time so that was good okay this is a question time your time 90 57 minutes हो चुके हैं and okay, whoever is there, 48 people, I'll give you the links. You can come into the chat box, maybe in the Zoom and talk to me.
if you want. Otherwise, I'll go and sleep. Where is the link? मेरा न्यू कंप्यूटर है, इसमें लिंक किधर है? लिंक, copy the link. Okay, copy the link. Okay, let's see how many people can jump into. Okay, whoever in the Zoom, they can come, or whoever in the YouTube, they can come into Zoom. Oh, what is this? Let's have a dinner tomorrow. Why? Okay, I'll read the question because there were a lot of questions on the chat in the YouTube. Let's see. I love to be smart in your eyes. भाई मेरी eyes में क्या होगा? मेरी eyes से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. Okay, where is that competency thing? Okay, let me see. Okay, please share, suggest us as offshore free training program for provisional registration. Pharmacist, my dear sir, Umar Saptan. Umar Saptan, if you are opera, then you can do all the trainings. If you are not, forget about it. I have already given a lot of tips. Maybe just watch my webinars. There are courses like Pharmacy Club. There are courses like I just said about the deadly pharmacist training. Sir, I want the material to pass the exam. I don't answer this question because the material does not pass you the exam. We all know that. Only you need to study with some roommate, classmate, or groupmate to pass the exam. And that is the key to pass the exam. Otherwise, you will be in the saga of paper 1 आसान था, paper 2 मुश्किल था, paper 2 आसान था, तो paper 2 मुश्किल था. एंड थोड़ी देर बाद आपके पास एक और सजेशन भी आएगा कि अभी कमेटी चेंज हुई है एग्जाम की, वो एग्जाम का पेपर तो नहीं मुश्किल बनाने वाले, ये भी सवाल शुरू हो जाएंगे. इज इट? तो सिंपल रखें, प्रिपरेशन मटेरियल की बात ना करें. विच कोर्स डू वी नीड टू डू improve? इकरा, communication. Hackers, we don't need you in my Zoom chat. Hackers, all the hackers can go and leave us. We don't need hackers here. Naveed Rana, are you in the hacker group? No, sir. No, sir. I'm not in the hacker group. You can use a mute thing. No, I just unmute myself. Let me just put on mute because your voice is too Okay.
ओके सर, ओके। ओके सर। और सर एक बात कर दी, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था, असल में मेरा बेटा जाग गया, तो सॉरी सर, मैं आवाज़ म्यूट करता हूँ। आपको अगर फ्री टाइम मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो आपसे थोड़ी बात आप करूँगा। अभी बात कर लें, थैंक यू आप सर। बात करनी तो अभी कर लें, दैट्स फाइन, यू कैन टॉक। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं कैमरे पे आप? आ जाए, कैमरे पे तरफ दिखा भी दें, चेहरा करा दें नवेद साहब, ताकि हम भी पहचान लें, क्योंकि मैं आपके सामने कैमरे पे बैठा हूँ तो आप भी जरा कैमरे पे। ओके सर सब। ये जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो ओके। दूसरे को नजर भी तो आना चाहिए ना। हम तस्वीरें खींच खींच के खत्म हो गए, कैमरा पूरा फिल हो गया, 36 का रोल हमारा। सर बिल्कुल सर। असल में यहाँ सिग्नल मसला रहता है सर, और ओ, हालत मेरी कमरे में पाकिस्तान का सिग्नल इंटरनेट से ही। है नहीं। ओके, जी बताइए नवेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या हाल है सर, ठीक ठाक? गर्मी है जी सर, जी, तो शर्ट है नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। ऑल गुड, आप बताएं, जी सर। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर अभी रिसेंटली 2024 में जनवरी। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो सर अभी मैंने रिसेंटली मैंने जनवरी 2024 में अपनी पीएचडी फार्मेसी में सर कंप्लीट की है ना। तो सर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेरा क्लास फेल हो गए हैं। तो सर आई वांट टू मूव टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विल पीएचडी हेल्प मी आउट फर्थ, क्योंकि यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट जॉब है ना सर, लेकिन यहाँ पे उतनी ग्रोथ है नहीं, ना इधर इतनी सैलरी है। और ना आई एम वर्किंग हेयर सिंस 25 सितंबर 2017 से यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इधर इतनी ग्रोथ है नहीं। तो सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि पीएचडी मेरे लिए हेल्प। तो आप क्या करना चाहते हैं आगे? आप क्या काम करना चाहते हैं यहाँ पे? जी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ नवीद साहब, व्हाट वर्क यू वांट टू डू हियर? सर आई एम working as a hospital pharmacist in a teaching hospital, Mardan Medical Complex, ठीक है, ये काम since तो मिलेगा 20, नहीं आपको। सर 2017. सर वेरी सॉरी टू से, ये काम तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलती। और कुछ करना चाहते हैं? और क्या करेंगे अगर हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी? जी नवीद साहब, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है मेरे ख्याल से, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, या मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल में काम, देखिए हॉस्पिटल की कहीं बात की है मैंने, आज जो सेमिनार किया है या पिछले जो सेमिनार किए हैं, हॉस्पिटल में जॉब्स नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, तो बस मैं हॉस्पिटल में अपनी जॉब नहीं एक्सपीरियंस की बात मिलेगी कर रहा हूँ जी सर। तो क्या जी सर। करेंगे? हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी, देन व्हाट इज द प्लान, देन व्हाट यू विल डू? सर एनी रिटेल फार्मेसी जॉब यो, आई हैव नो इशू, आई डोंट हैव एनी इशू, ओके, तो कोई बस मसला नहीं है। उसकी तैयारी करें फिर, जो भी हमने डिस्कशंस किए हैं कम्युनिटी फार्मेसी में जो जी नीड है सर। उसको फोकस करें। अगर आप समझते हैं कि आप उसमें फिट इन हो सकते हैं तो व्हाई नॉट। आपको इंशाल्लाह। आपको वीज़े में तो आसानी हो जाएगी, आपकी जो ये इंशाल्लाह। डिग्री है उसकी वजह से आपको जो पीएचडी का पाथवे होता है उसकी बेस पे कुछ ना कुछ जी आपको सर। आसानी हो जाएगी। इंग्लिश का टेस्ट अगर आपने तगड़ा किया हुआ है और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर आपने किए हुए तो हो जाएगा आपका काम। लेकिन यहाँ आके आपको अपने आप को 360 डिग्री टर्न मारना पड़ेगा, आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपने हॉस्पिटल में कोई काम किया है वहाँ पे। दैट डजंट मेक एनी फेवर फॉर नहीं यू। नहीं बिल्कुल जी सर। नहीं बिल्कुल सर, आपकी वीडियोस मैं देखते रहता हूँ और कमेंट भी करते रहता हूँ। ये मुझे पता है कि मतलब उधर मुझे ये बताना ही नहीं हो। जी, क्योंकि ये इन्वायरमेंट डिफरेंट है,
ठीक है, यहाँ के एक्सपेक्टेशन कुछ और है, जो मैंने काफ़ी देर समझाने की कोशिश की है अभी। और उसके लिए ट्रेनिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन उधर एज अ फार्मासिस्ट ही काम करना होगा मुझे। ज़रूरी नहीं है आप देखें, असल असल काम है पहले। दो चीज़ें हैं, आप आएंगे कैसे, आपको ये थॉट आउट करना है। आपने बताया पीएचडी है, तो पीएचडी के पाथवे पे आप चल के आ सकते हैं अगर आपने अपनी डिग्री फिनिश की हुई है और वो जो पाथवे खुला हुआ है। मुझे नहीं पता उसकी डिटेल, लेकिन कुछ ना कुछ है, मुझे पता है लोग आते हैं उसके पाथवे पे यहाँ पे। तो उस पे जाके आप देखें। वरना फिर माइग्रेशन पीपल है हमारे साथ काम करते हैं, उनको उनको अपना केस देते हैं, वो आपका केस करके सबमिट कर देंगे, आप उनकी चीज़ें पूरी कर सर दें। सिग्नल इशू है मुझे, तो को भी स्टॉप कर लेता हूँ और आवाज़ को भी म्यूट और व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप पे कभी मैसेज पे सर बात बस कर लीजिएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट करने कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है डॉक्टर नवीद रहमान से। इधर सिग्नल्स बहुत बहुत ठीक है, खराब आ चलो ठीक है, रहे मौका हैं। होगा तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। नो नो इशू, ओके, ऑल गुड ऑल गुड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बात कीजिएगा और जी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको मैं दोबारा फिर बात होती है। थैंक यू। ओके, श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके, यहाँ पे कैप्स एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में कोई साहब हैं रन करके, IB रन उनका नाम है, जो कि वीडियो जो हमारी चल रही है यूट्यूब पे, उस पे वो कमेंट्स कर रहे हैं कि कोई उनको गाइड कर दे प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल अपने आप को माइंडसेट क्लियर करना है कि आपने एग्ज़ाम देना कब है। 2 महीने से 3 महीने अगर आप दे सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और कुछ प्रिपरेशन ग्रुप्स होते हैं, उसमें उनकी क्राइटेरिया फुलफिल करके आप आ सकते हैं। तो वहाँ पे आ जाएं और उधर आके पार्टिसिपेट करें। और जब पार्टिसिपेट करेंगे, डेली का 1 घंटा आप जूम पे आके डिस्कशन करेंगे। जो भी वहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो भी टॉपिक्स डिस्कस हो रहे होंगे, वहाँ पे कुछ नोट्स शेयर किए जा रहे होंगे, तो वो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सो सिंपल। इसके लिए कोई एकेडमी है, इसके लिए कोई बड़े बड़े वीडियो बनाने वाले जो हैं उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे संभाल के रखो, गाड़ी खरीद लेना आके यहाँ पे, ठीक है। ओके, गुड गुड लक इफ यू गॉट द पॉइंट। जस्ट से yes or no if you got my answer. IB run, I explained that for you. I think you were not there. I'll come back in a minute. Okay, Priya Singh. Priya Singh, where are you? Are you in Australia? Are you in India? Are you in Middle East? Where are you? You're putting a lot of good comments about you have learned a lot of things from my video. Thank you very much for saying things. Need material for CAPS. Manjot Kriya, I don't sell, I don't give material. I just recruit people to come into my community, and that's how they build up a relationship with some other friends, and they study on daily basis and they pass the exam. Okay. I want to join IB run. Okay, I'll share you the links. So first of all, आप अपने 5-6 सोशल मीडिया बना के सोशल मीडिया पे नजर आने शुरू हो जाओ। उसके बाद मुझे ढूंढो उन सोशल मीडियाज पे, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, ठीक है ना, जिस तरह वो जो होते हैं यूट्यूबर्स वो सब करो। और उसके बाद तुमको खुद अंदाजा होगा कहीं ना कहीं वेबिनार में कि एक लिंक पड़ा हुआ होगा, उसमें लिखा होगा कि बूट कैंप में आ जाओ, तो आप उसमें आ जाओगे। बहुत सिंपल है। Okay, let's chat with the people sitting with me. इसमें ज़्यादातर नाम कुछ नए लोग भी हैं, इसमें कुछ पुराने लोग भी हैं। ओके, किसी के पास कोई क्वेश्चन है या सब घूमने फिरने आए हुए हैं? Please provide the material. No, please give me the material. Where's the material? Material अली बाबा चालीस चौर के पास है, मेरे पास नहीं है। सर, यू आर मेंटर फॉर अस, थैंक यू। ओके,
आज एक न्यूज ब्रेक करनी है। आज हमारे कुलीग लैंड किए हैं कतर एयरलाइंस से इन टर्म्स ऑफ कैप्स जर्नी। जिन्होंने काफी सारी देर कैलकुलेशंस पढ़ाई हैं हमारे साथ, वो यहाँ पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया। क्यों हसन साहब, आप बड़े खामोश बैठे हैं? Thank you very much for joining today. If you don't have any questions, or if you have any question, you still have a chance to say something. बाकी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। ट्रेनिंग अपग्रेड करें, अपने लिस्ट बनाएं, जो जो कोर्स करते जा रहे हैं उनको लिस्ट को ऐड करते जाएं। एंड मेक अ एक्सेल शीट के कोर्स किस डेट को किया आपने, उसके सीबीडी पॉइंट्स कितने आपने हासिल किए, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में नीचे लिखा होता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव गेन। दैट विल काउंट, मे बी यू कैन शो दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रेनिंगशिप कि यू हैव डन दैट मैनी सीपीडी प्रोग्राम्स, सीपीडी पॉइंट्स कर चुके हैं आप। तो कीप अ रिकॉर्ड। और अगर if you're part of pharmaceutical society of Australia, do that deadly training, pharmacist training course, and also try to do certain courses which are available free. And there's another training program from Fred which is available, Fred Dispense Software. Do that as well. There's a portal which is available from Blackmore's. There are two types of trainings available. One is those who have not done the opera. You can still do that program, enroll yourself and do that. And if you have done the opera registration, you can select that training as well. And there's new training launch. I will share you the flyer in my groups. There's something new that the company has established for training purpose. So that's something which I will share in the WhatsApp groups. All right. And uh, and there's a company called Ego Pharma. They have established a online learning portal which I found very, very effective. That website address is called egofarm.com, and there's a healthcare professional portal for pharmacy assistants and for pharmacists. So just see which one you can access and try to complete all the trainings available, and that's free. All right, so that's free. You can do that. Okay, and add in your resume, show them that you have done all those um, health, skin healthcare product trainings. And you know that pharmaclub.com.au, the app that you have, you can do that as well. There's a big intake of weight loss programs in Australia at the moment. Everyone trying to be fit in Australia. Manjura M OUNJRO, which is a new injectable medicine, which is now available in Australia as non-PBS item and is most effective way of weight loss, and is very, very, very popular at the moment. So you should have the website, you should have the app downloaded on your phone and do watch all the all the medicine, all the information of that medication, all the videos, and yes, yes, I'm talking in general. Akila, who's Akila in this group? Is she's asking or he's asking? I can't figure out because Akhil is the male name. Akila could be female. Even offshore candidates is possible. Yes, that's why I'm telling you. Okay. I need a sponsorship. Either me or my wife. How I can help you? I don't know the answer to that. How I can help you? I don't know that. Yes, I am PTE group. Keep in touch with Sir Irfan if you have done your assessment to send to what? Send to what? Send to what? Assessment sent to your SS to Idris. Daniel. Who's Daniel? I don't know who's Daniel here. Daniel is gone.
Congratulations for what, sir? Sami, are you there? Yes, sir, I am. Oh my God. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लगता हूँ बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे। चलो माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट सर। और आपकी रवानगी कब हुई और अराइवल कब हुई, उसका जर्नी बता दें 2 मिनट। जी सर, मेरा तकरीबन पिछले 24 आवर्स जर्नी के अंदर ही है। 19th को सुबह 10 बजे लाहौर से मैंने फ्लाई किया था कतर एयरलाइन से। पहले दोहा 4 घंटे की वो फ्लाइट थी, फिर 8 घंटे का स्टे था, फिर उसके बाद 13 आवर्स की फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू एडिलेड थी। वाह। और एडलेड में इरफान हाशमी नहीं मिला आपको? इरफान हाशमी साहब एडिलेड से बाहर रीजनल में गए हुए हैं सर्व करने। तब पता चला मुझे रात को जाना है 12 बजे रात, कि मुझे सुबह काम पे पहुंचना है। या तो मैं बोलता मैं सो रहा हूँ, सुबह कहीं और से बंदा आ गया है, या जी फिर। माशाल्लाह सर, बहुत एक्टिव हैं आप। और और मैं रीजनल के गोल्ड कोस्ट से फ्लाई करके आया था उस टाइम पे, लेट जहाज उतरा था 11 बजे के टाइम पे, और 11 बजे उतरते ही पता चला काम पे पहुंचना है। ओके। जी बेहतरीन सर। सर थैंक यू वेरी मच सबसे पहले ये सारा गाइड करने के लिए, अरे वाह। और बीइंग सच ए गुड मेंटोर, एक्सीलेंट मेंटोर, बेस्ट मेंटोर एवर। और सारे सारे प्रोसेस के अंदर 1 साल से कुछ ज़्यादा देर हो गई अब मुझे स्टार्ट किए हुए प्रोसेस। तो टुडे आई एम हियर इन एडिलेड। वाह। ये वाकई में एडलेट पे बैठे हुए हैं भाई, आप देख रहे हैं इनको सर्दी लग रही है, आप लोग गर्मियों के इलाके में बैठे हुए हैं। जी जी। ये ये गर्मियों का पूछेंगे इलाका छोड़ जैकेट क्यों के पहनी हुई है। सर्द सर्द हवाओं में सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। जी सर, हमारे पास वहाँ पे पाकिस्तान में गर्मी इतनी थी कि पता नहीं चल रहा था कि सर्दी कितनी होगी। ओके। यहाँ पे पहुंच के ही पता चला कि कितनी सर्दी है। तो बाहर निकले हैं अभी रात में कहीं 8 डिग्री टेम्परेचर में? अ, अभी मैं जाऊंगा बाहर। ओ। अभी मैं आया था अभी, तो बस खाना खाया, कुछ और प्लान करने हैं कि किस तरीके से कोर्सेज किए जाएं यहाँ पे, कुछ और कैसे। हाँ, बस वो फर्स्ट एड वाले को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आई वाज एक्साइटेड कि आप भी शायद ट्रेनिंग कर लेंगे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की, लेकिन आपका आईटीपी गिल्ड के साथ अभी सेटअप नहीं हुआ हुआ है, तो आपको वो बैठने नहीं देंगे ट्रेनिंग के अंदर। तो उसके लिए फिर आप रिलैक्स हो जाएं, अगली ट्रेनिंग जब होगी जुलाई जुलाई में, उस वक्त आप कर लीजिएगा, लेकिन बाकी चीज़ें कर लें। जी सर, इंशाल्लाह। और अपना बैंक अकाउंट कर लें जाके कल, जो भी आपको अच्छा लगे। सीबीए, जी नैब, बिल्कुल। वेस्टपैक, ये यहाँ के 3 मेजर बैंक हैं। और टीएफएन टैक्स फाइल नंबर कर लें। ठीक है। फर्स्ट एड सीपीआर का कोर्स अगर आपको मिल जाए तो उसको करके ख़त्म कर दें। यूएसआई एक चीज़ होती है, सर दैट्स यूनिवर्सल। डन। यस। अच्छा, वो कर लिया आपने? और अगर जी सर। कल का कोर्स मिल रहा है किसी वक्त में, शाम में, दिन में, जो भी 6 घंटे की शिफ्ट मिल रही है उसमें वो कर लें, उसको एक तरफ कर दें, आपकी बहुत चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। और आईटीपी का प्रोग्राम के लिए फॉर्म भर के भेज दें, डॉक्यूमेंटेशन अटैच करवानी है। या तो अगर कल टाइम है, वरना फिर वीकेंड पे अगर टाइम है तो वो फहीम से मिलने जाके उधर मॉडबरी को जी एक सर, तरह से। इंशाल्लाह। और राहत फ़तेह अली परफॉर्म कर रहे हैं सैटरडे नाइट को एडलेड में, अगर दिल करे तो उधर हम टिकट अरेंज कर रहे हैं। इदरीस साहब ने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्होंने वो अटेंड करना है, तो वो उनको मैंने वादा किया कि हम टिकट ला के देते हैं आपको कहीं से। तो 2 टिकट्स कर दीजिएगा, बल्कि 3। अब हसान शाहिद भाई भी हमारे साथ ही हैं। 3 टिकट्स कर अच्छा। दें, हम आ जाएंगे। रियली? ओह माय गॉड। ओके। चलिए ठीक है। ओके ओके ओके। सैटरडे को दोपहर में मैंने एक लंच ऑफर किया हुआ है अपनी टीम को, अगर वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा हो तो उधर आ जाए। पाकिस्तान के कॉन्सुलेट जनरल साहब भी आ रहे हैं मेलबर्न से फ्लाई करके उस इवेंट में।
तो वो बड़ा मजेदार सर इवेंट होगा। मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। मैंने 20 लोगों की टेबल बुक की हुई है उस इवेंट के अंदर। इंशाल्लाह सर 21 कर दें, 22 कर दें, 23 कर दें। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है आ जाए, कुछ बात नहीं। मैं आपको वेन्यू का एड्रेस शेयर कर देता हूँ जहाँ पे है ना, 11:30 to 2:30। मज़ा आएगा आपको वहाँ पे। इंशाल्लाह मैं सर वहीं पे हूँगा। जबरदस्त। तो हसन शाहिद भी ट्रैवल कर रहे हैं मेलबर्न से नहीं, बेलाराट से। सर प्लान तो बना है मेरा, बस रीच का और समी भाई का। वाह भाई, वाह, क्या बात है। एलीट एलीट रीयूनियन हो रही है इसका मतलब एडलेट के अंदर। इंशाल्लाह। अच्छा, पीएसए की तरफ से $700-800 का कोर्स होता है, फर्स्ट एड, मेंटल फर्स्ट एड कोर्स होता है। इट्स वेरी कॉस्टली, लेकिन अभी गवर्नमेंट पीछे से सपोर्ट कर रही है कि सारे फार्मासिस्ट को, सारे फार्मेसी वर्कफोर्स को वो कोर्स करना है, ताकि हम अपने इस माशरे में मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकें। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठा लें। पीएसए का जो वो है ना, साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आ रहे हो ना तो यहाँ का एड्रेस डाल के ना वो ट्रेनिंग में इनरोल कर लें। वो जी सर्टिफिकेट पूरा ठीक सर। साल काम आएगा। इट्स अ बिग कॉस्ट सेविंग। और डेडली फार्मासिस्ट जो है वो भी कर लें। जब हमें ट्रेनिंग में अनाउंस किया गया था, आई वाज थिंकिंग अभी डेडली फार्मासिस्ट क्या होता है, कोई मार देने वाला फार्मासिस्ट। तो पता चला कि वो फर्स्ट स्टेशन जो है उसके अंदर डेडली फार्मासिस्ट का मतलब होता है, डेडली मीन वेरी गुड, डेडली मीन बहुत अच्छा। तो ये वहाँ की लैंग्वेज है। जी ठीक सर, वी विल बिकम डेडली फार्मासिस्ट Yes. So इन I would दैट request, इन दैट recommend टर्मिनोलॉजी। whoever sitting here, you can do the deadly training, deadly pharmacist training, regardless अगर आप कहीं मुल्क में बैठे हैं या मुल्क से बाहर बैठे हैं। That's very good thing from BSA। जी जरूर सही ठीक से। सर। तो एडलेड में आप एयरपोर्ट से उतरे और जहाँ अकोमोडेशन थी वहीं आ गए अभी? जी जी सर, एडिलेड से ही बाहर से टैक्सी लेके मैं इधर आ गया था। अरे वाह, जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मैं अगर होता तो मैं आता आपको, लेकिन वो मैं शायद सर दैट्स मैनेज नहीं सो कर। नाइस ऑफ यू। और चलें, आप आउट ऑफ सिटी थे तो इंशाल्लाह वीकेंड पे मुलाकात होती है, जी जी, सैटरडे वीकेंड। इद्रीस तो 11:30। जब थे, इद्रीस के टाइम में वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल रहा था उस वक्त। ठीक है, तो वो दिन, और उस दिन हमने एक प्रोग्राम भी रखा हुआ था शाम के टाइम। तो मैं तो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अरेंजमेंट हो गया था इद्रीस साहब के लिए भी। लेकिन मैंने उनको ऐसे दोस्तों के साथ मिला दिया था कि वो खुद ही लेकर आ गए थे उनको देना। तो बड़ा होमली किस्म का जी जी फंक्शन अटेंड किया बेहतरीन। था इद्रीस भाई ने। और तैयार होके आए थे। वो तैयार होके आए थे, और वो उनको फिर मैंने शर्ट दी, हमने मैच देखा रात भर बैठ के। पाकिस्तान प्रिडिक्शन पे 94% जीतता रहा, और आखिर के 3 ओवर में पाकिस्तान मैच हार गया। तो वो भी देखा हमने। वो सब, वो नाइट सर दोबारा याद ना करवाएं सर। खासकर वो रिजल्ट के, वो मैच के जो लास्ट मोमेंट्स थे उसको के। यस। बाकी तो बहुत जबरदस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह। गाने का तो ना ही पूछे, ऐसा गाना मतलब। सबसे जबरदस्त चीज तो आपने मोहम्मद नवाज, पाकिस्तान क्रिकेटर इंटरनेशनल, उसकी हेलमेट पहनी हुई थी उस वक्त, और हम भागते हाँ, थे फोटो खींचते थे। उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें मतलब देखी जो कि पहले कभी नहीं देखी थी सर। वो डिफरेंट प्लेयर्स की शर्ट्स और वो। हाँ, वो आप घर आए थे ना हमारे म्यूजियम। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। में अच्छा लगा, थैंक यू। बाकी समी भाई को सर खुशामदीद कहते हैं दिल की अता गहराइयों से। वाह। जी वेलकम। हाँ, कि वो आए, और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उसके आगे आने वाली जर्नी में। देखिए थैंक भाई, यू प्लीज भाई। सिंपल सिंपल सी बात है। फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड की तस्वीर मैंने शेयर की है अभी उस पे, जो अभी सही जीते हैं। अभी अभी जीता है, लड़का जीता है, बड़े दिनों बाद लड़का जीता है, कोई मेल जीता है, वरना तो लड़कियां ही जीतती चली आ रही होती हैं। ठीक है, तो
उसकी हाँ वीडियो शीडियो आएगी, देखें वो कहाँ काम करता है, किस फार्मेसी पे काम करता है, उसने क्या किया है ऐसा जो उसको इतना बड़ा अवार्ड मिल गया अभी, जो टेरी वाइट वालों ने दिया उसको। ठीक है। और इसी तरह गिल्ड की जो विनर है उसको देखें, फार्मेसी इंटर ऑफ द ईयर लास्ट ईयर की जो है टेरी वाइट की वो लड़की है, वो वियतनामी बैकग्राउंड की है। उसको देखिए उसने क्या किया है, उसके उसको उसको पढ़े जाके, और जो कुछ किया है ना उसने वो कॉपी कर हाँ लें। वो उसको उसमें कोई चीज़ मसाला डालने की जरूरत नहीं, उसको बस कॉपी पेस्ट कर लें, सिंपल इज दैट। एग्जैक्टली। और कोशिश करें कि उससे 10 हाथ ऊपर करके करें। जी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह। आगे लड़कों के पास अभी आ गए, नहीं तो अगले साल आ जाते हैं इंशाल्लाह। अभी वकास अशरफ वैक्सीन क्लिनिक करके आ रहे हैं, ठीक है। उनकी वैक्सीन क्लिनिक को पाकिस्तान हाई कमीशन की वेबसाइट ने शेयर किया है। ऐसा काम करें, आप जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया देखें, वहाँ पे वैक्सीनें लग रही है टकटक टकटक टकटक। लगाने वाले कौन है? वकास अशरफ और नीलम उनकी वाइफ। और वो हमारे साथ आमदे प्रिसेप्टर। जी माशाल्लाह। लेकिन मैंने उनको वकास को यही बोला था कि भाई काम करो तो शेयर भी करो। काम करके अगर शेयर नहीं करोगे तो लोगों को कैसे इंस्पिरेशन मिलेगी? शेयर करो। काम करते हो, बताओ लोगों को। सर वो जो एसीटी में है वकास यूसुफ सर। जी 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 जी। हाँ जी, मैंने उनको भी सीवी सेंड की थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हुआ। उई, वाह, इंटरव्यू तक पहुंच गया आप? हाँ जी, इंटरव्यू तो मेरा काफी दिन पहले हो गया था। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी जगह नहीं है उनके पास? उन्होंने सीवी पे आपका नाम देखा था, कहते हैं आप कैसे जानते? ओए, मैंने कहा मैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा। वो कहते हैं नहीं इनको नहीं लेना, ऐसा तो नहीं बोला उसने? नहीं, कह रहे थे आपको सितंबर में हम करेंगे। वाह, ओके। क्योंकि मैंने बात की थी वकास से हाँ जी। आपके लिए भी, लेकिन वकास ने ये कहा था कि अभी मेरे पास पोजीशन मैंने दे दी है, शायद फुल कर दी है। बहुत बहुत ही उनका अच्छा ग्रुप है। लाहौर यूनिवर्सिटी के फार्मासिस्ट आए हुए थे, उन्हीं के साथ के, उनका नाम वकास अहमद था, अभी जो कॉन्फ्रेंस में मिले थे मुझे। गुड। नेम, अच्छा देखिए, नेम जो है ना मुझे भी याद नहीं होगा। बेस्ट तरीका यह है कि आप गूगल करें, जस्ट गूगल दैट पर्सन। Google like intern pharmacist of the year award winner, intern pharmacist of the year from Pharmacy Guild, intern pharmacist of the year from Pharmaceutical Society of Australia, intern pharmacist of the year from Terry White, year wise अगर आप गूगल करेंगे तो ये सारे लोग की कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी, एंड देन यू कैन फॉलो देम। सो सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये तो खाली एक इंटर्न की बात कह रहा हूँ, इसके अलावा इन फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर भी जीतते हैं, ठीक है, तो उनको भी पढ़ें कि अरे वो कैसे जीता है, उसने क्या क्या किया है। उसने ऐसे काम नहीं किया होगा कि सुबह घड़ी देख कर आया होगा और वापस घड़ी देख के चला गया होगा। उसने उससे ज़्यादा काम किया होगा, उसने कोई इनोवेटिव काम किया होगा। और एक एक और अवार्ड होता है यहाँ इनके पास इनोवेशन के ऊपर, आप कोई इनोवेशन करें आके, कोई ऐसा तरकीब लगाएं, ऐसी चीज़ करें जो अभी तक किसी ने नहीं की है प्रैक्टिस के अंदर, और उसको फिर मनवाएं ये मैंने इनोवेशन की है, इनोवेटिव। जो मुझे फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2009 में पीएसए की तरफ से, वो इनोवेटिव काम की वजह से मिला था। रिसर्च की थी, डाटा सेलेक्ट किया था, रीजन में गए थे, रीजन के ऐसे टाउन्स में गए थे जहाँ पे कुछ नहीं था। फार्मेसी तो दूर की बात है कि कोई फार्मासिस्ट ने सोचा भी नहीं था वहाँ आके काम करेंगे। ऐसा काम किया किया कि फार्मासिस्टों ने आके मजाक उड़ाया, हमारा हंसी उड़ाई, हाँ 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 करके हंसते थे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम। और एक साल के बाद उसी सोसाइटी ने बुला के अवार्ड दे दिया, इनोवेटिव वर्क। देखिए, अवार्ड से कोई पैसे नहीं मिलते, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, रिकग्निशन मिलती है, और आपको अच्छा लगता है कि आपने इस प्रोफेशन में अच्छा काम किया है, बस ये होता है और कुछ नहीं। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ये अवार्ड अवार्ड जीतने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से होता है।
anyone has any questions before we leave? तो भाई मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। वैसे तो मुझे हेल्पलाइन के तौर पे लोग यूज कर रहे होते हैं, ठक करके मैसेज मारते हैं मुझे हेल्पलाइन की तरह, ना नाम बताते ना कुछ बताते। मैं वो इदरीस के साथ बैठा हुआ था तो इदरीस ने खाने पे बोला, फिल्मी डायलॉग बोल दिया मेरे सामने, वो वाला कि नामुमकिन ही नहीं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। तो मैंने कहा यार एक मिनट एक मिनट, इस पे ना वीडियो बननी चाहिए इसके ऊपर। ये डायलॉग जो है ना बहुत सेट बैठता है उन लोगों के लिए जो मुझे हेल्पलाइन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, वो डायलॉग तो बिल्कुल फिट बैठ रहा होता उसी सिचुएशन के, वो जो आप बता रहे थे ना उस दिन, जिसने मेरे ख्याल में रिसेंटली कॉल की थी आपको रात के टाइम। उसी दिन, हाँ उसी दिन। करे अल्लाह ताला करे, जून खत्म होने वाला है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, सारी चीजें रीसेट हो जाएंगी, वीजे वीजे सब रीसेट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह। ईओआई जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने की उम्मीद रखें। वैसे जो सर्वे अभी हुआ है, वर्कफोर्स सर्वे अभी हुआ है जो कि हो चुका है, और ये 8 CPA की अनाउंसमेंट से पहले हुआ है, ठीक है ना। तो उसका इम्पैक्ट इस वाले ईओआई पे पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 8 CPA की अप्रूवल अनाउंसमेंट आने के बाद होता ना तो फिर सिचुएशन नई के हिसाब से होता, वर्कफोर्स सर्वे फार्मेसी गिल्ड का। तो देखें क्या होता है, लेट्स सी, बट द चांस। लेकिन एग्जैक्ट। बहुत ज़रूरी है, फोकस हमारा रीजन को होना चाहिए। और ठाकुर साहब ने मना किया है कि भाई लोगों को मना करें, सिडनी की फार्मेसियों पे सीवी ना भेजें, मेलबर्न की फार्मेसीज पे सीवी ना भेजें, वो खुद शर्मिंदा होते रहते हैं। कहते हैं इरफान क्या करें यार, मेरा दिल दिल बहुत दुखा हुआ था। मैंने कहा मैं तुम्हें आगे बताऊंगा यार, इनको कोई समझाए यार। बाहर से बैठ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सिटी की फार्मेसीज में जॉब 250 लोग सीवी डाल रहे हैं, तो हम कैसे दें जॉब, है कहाँ से दें जॉब है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसा भी है कि हमारे अपने ग्रुप के लोग मेरी ही फार्मेसी में, हुबार्ट की फार्मेसी पे सीवी आ रहा है, तो उधर आ रहा है, तो कम्बलैंड पे सीवी आ रहा है। तो वो चक्कर है कि जब आप सीवी भेज रहे हो ना, 600 सीवी आपने गिनती के नहीं भेजने, 600 सीवी आपने टारगेटेड भेजने। टारगेटेड, टारगेटेड मतलब है कि राइट जगह पे निशाना लगाएं, तब मजा आएगा। 600 ना भेजें, 200 भेजें, लेकिन 200 टिका के रीजनल के एरियाज में भेजें। अपने अपने सिलेक्शन अच्छी रखें जो जहाँ भी आप कर रहे हैं। और अभी ये आइस ब्रेक होगी क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि सिचुएशन विल इम्प्रूव बिकॉज 8 CPA के जो इम्पैक्ट हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री के लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। ओके आपको सर, आराम। ठीक है, गुड नाइट सर। थैंक